Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Okay, students, my voice is clear. Please let me know. Okay, so here we have a very interesting topic: how the U.S. influenced Middle East geopolitics. Historical analysis. यूएस का इन्फ्लुएंस कैसे हुआ मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स के ऊपर इसको एनालाइज करने वाले हैं हम So students, let's be very clear from the start. The real entry point of the United States into the Middle East was not politics, not ideology, not democracy. Politics, ideology, and democracy, none of them was the reason. It was oil. Okay, oil was the main reason of the involvement of US to the Middle East. In 1938, something happened that changed the destiny of the Middle East forever. American engineers working in Saudi Arabia discovered massive oil reserves. Now, imagine the scene at that time. The world was already running on oil. Cars, ships, planes, industries, all dependent on it. For America, which was rapidly rising as a global power, this discovery of oil was like finding a treasure chest. But oil alone is never enough. You must need control and security to access it. And here comes the turning point. In February 1945, please let me know my sound is clear. आपको आवाज क्लियर आ रही है? Okay. In February 1945, right after World War II, the US President Franklin D. Roosevelt met the King Ibn Saud of Saudi Arabia. Both presidents, the President of America and the King of Saudi Arabia, aboard the US Quincy, a warship in Suez Canal. Picture this moment as one leader representing the whole world's most powerful democracy, and the other, the founder of a traditional desert kingdom. They had almost nothing in common, different cultures, different religions, different systems. Yet, when they shook hands, they made a deal that shaped world politics for the next 80 years.
a big change for upcoming 80 years. What was the deal? Very simple, oil for security. Okay, Roosevelt here promised that America would protect Saudi Arabia militarily, economically, diplomatically, and in return, Saudi Arabia promised uninterrupted oil supplies to the United States. Means both will provide benefit to each other. अब ये सोचिए कि ये सिर्फ एक हैंडशेक नहीं था, ये एक मिडल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स थी उसको रीडिफाइन कर दिया गया यहाँ पर. From that moment on, the US was no longer a distant observer, it became a permanent stakeholder in the Middle East. Now, let me ask you, if there was no oil in the Middle East, would America have cared so much? अगर ये ऑयल की फाइंडिंग यहाँ पर ना होती तो अमेरिका को इतनी केयर होती अबाउट द मिडल ईस्ट, would that much care or that much concern US would show towards the Middle East countries? Probably not. Oil was the magnet, everything else, whether alliances, wars, or diplomacy, came later. And this first step, oil and Saudi Arabia, is what opened the door to everything that followed. Okay, the Cold War rivalries, Arab-Israeli conflicts, the coups, the wars in Iraq, and the war on terror, each and everything that actually opened the door after this oil and Saudi Arabia, their American invasion. Okay, so remember this handshake of 1945, because in many ways it was not just a handshake. If we see, it was the beginning of a new world order, a start of a new world order. So ये एक सिंपल डील थी, इसमें पूरे रीजन की जो जियो पॉलिटिक्स थी उसको बदल के रख दिया. आई होप द सिनेरियो फ्रॉम हियर इज क्लियर. अब आगे से हम स्टार्ट करेंगे इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस. Here we have setting the stage, the Middle East before Western invention. Students, before we dive into America's role, let's first pause and imagine the Middle East before heavy Western involvement. What did this region look like? What was the appearance of that region? ये region actually में था क्या before the involvement of Western? For almost 600 years, from 1299 to 1922, the Middle East was under the rule of Ottoman Empire. सल्तनत उस्मानिया के अंडर था Middle East. Think of it as a vast empire that was actually stretching across three continents: Europe, Asia, and Africa. The Ottomans were not just rulers, they were the organizers of political, religious, and economic life in the region. Within this empire, the power was actually not centralized like modern states. Instead, there were complex tribal alliances and local power structures. Leaders of tribes and clans actually had influence, and loyalties often shifted based upon survivals, trade, and protection. Religion and culture also tied people together here. Muslims, Christian, Jews, all were part of this interconnected society. Means that it was a vast stretching Muslim society where peoples were interconnected. Their trade, the trade caravans, which actually passes through ancient cities like Damascus, Baghdad, and Cairo, linking Europe, Asia, and Africa. Means, in other words, you must say the Middle East was not just a region; it was a crossroad of civilization, a big crossroad of civilization. Now here comes the twist. As the Ottoman Empire began to weaken in the 19th century, जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया कमजोर पड़ना स्टार्ट हुई, यूरोपियन colonial powers started looking at the region with their hungry eyes. उनकी नजर पहले ही इस region के ऊपर थी. Why?
Two reasons. One was strategic location, and the second was resources. Two most important reasons why the European colonial powers were actually looking at the Middle East while actually looking at this state. Britain and France, the two giants of European imperialism, slowly carved their spheres of influence. After World War One, the Ottoman Empire finally collapsed, and the Britain and France finally emerged as the dominant powers. They drew borders, created new states, and installed leaders who often served as in their own interest. आप ये सोचिए कि पहले ये रीजन एक एम्पायर के नीचे कनेक्टेड था, लेकिन अब इट वाज डिवाइडेड इनटू फ्रेजाइल स्टेट्स, आर्टिफिशियल बॉर्डर्स एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंस हियर. इसने क्या किया? दिस लेड द ग्राउंड वर्क, द स्टेज, एक कंप्लीट स्टेज जो है वो सेटअप हो गया फॉर द फ्यूचर रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. बिकॉज वन ऑफ द जो यूरोपियंस हैं वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, एंड अमेरिका स्टेप टू फिल द वैक्यूम. उनकी जगह पे अमेरिका के लिए बहुत गोल्डन चांस था इस जगह को यहाँ पर अपना जो है वो एक इमेज रखने के लिए, अपने आप को सुपर पावर शो करने के लिए, एंड अमेरिका फाइनली स्टेप्ड इनटू फिल दैट वैक्यूम. ओके, अब हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा की तरफ अगर आते हैं. अर्ली जो यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, अमेरिकाज इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट बिकम वेरी क्लियर. इनका जो इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा क्लियर हो गया. फर्स्टली जो रिसोर्स सिक्योरिटी वसाइल थे उनकी हिफाजत. द यूएस was becoming more independent on Middle Eastern oil, so securing it was top priority. अमेरिका को इसे अपनी प्रायोरिटी के साथ सिक्योर करना था. Secondly, Cold War rivalry. America wanted to stop Soviet Union's expansion. This became the backbone of US policy. ठीक है जी. And thirdly, on the next, military positioning, bases alliance and different partnerships were built so that the US could project power globally. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो अमेरिका का एक मिशन रहा, या पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो इंटरेस्ट रहा, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यूएस का, वो यहाँ पे रहा. जो टर्निंग पॉइंट था वो आया हमारे पास 1947 में विद ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के साथ. यहाँ पे अमेरिका ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि इट वुड एक्चुअली सपोर्ट टर्की एंड ग्रीस अगेंस्ट सोवियत यूनियन, सोवियत प्रेशर सॉरी. अब ये था अमेरिका का पहला बड़ा जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट रीजन के लिए. इस डॉक्ट्राइन से असल में अमेरिका का जो सफर था मिडिल ईस्ट में वो शुरू हुआ. एक ऐसा सफर जो फिर कभी रुका ही नहीं, और ये सफर जो इसका एक इन्फ्लुएंस था वो यहाँ से आगे कंटिन्यू चलता चला गया. ओके, नेक्स्ट ऑयल डिप्लोमेसी. अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका एक्चुअली स्टेप्ड इनटू द मिडल ईस्ट विद थ्री क्लियर गोल्स. यहाँ पे अमेरिका के पास तीन क्लियर गोल्स थे. वन वाज ऑयल सिक्योरिटी, सेकंड कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी, एंड थर्ड मिलिट्री पोजीशनिंग. Oil security, US actually needed Middle Eastern oil. Second, Cold War strategy to stop Soviet expansions. Third was military positioning to build bases and alliances. In 1945, US President met King of South. They shook hands, as I've told you in start of my lecture, and their deal was done: oil for security. America got reliable oil access, and Saudi Arabia got US protection. अब इस चीज ने किसकी तरफ लीड किया? दिस लीड टू अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, अमेरिकन ड्रिलिंग राइट्स एंड यूएस बिल्ड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर. और इस डील ने जो पूरे गल्फ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो बदल दिया. यानी दोस्ती का जो असल सबब था वो तेल और तहफ़्फ़ुज़ पे रहा, ना कि सिर्फ डिप्लोमेसी. Okay, after that,
जो CIA का यहाँ पर रोल रहा इन 1953 ईरानियन को 1951 में जो ईरानियन प्राइम मिनिस्टर मोजादेक नेशनलाइज किया उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री को डायरेक्टली चैलेंजिंग ब्रिटिश पेट्रोलियम एंड वेस्टर्न इंटरेस्ट. In response, the CIA and British M16 launched operations AJX in 1953, removing Mossadegh and installing the Shah Muhammad Raza Pahlavi and install किया गया as a pro-Western ruler. For the US, this secured oil and a Cold War ally. दोनों बेनिफिट्स यहाँ पे यूएस ने जो है वो अपने लिए हासिल किए, बट फॉर इरानियंस it actually created deep resentment. This single को become a turning point और यहाँ से जो है वो एक turning point start हुआ. Sowing seeds of anti-Americanism start हो गया. That actually later exploded in 1979 Islamic Revolution. यानी तेल बचाने के लिए अमेरिका ने यहाँ पे एक हुकूमत गिराई और दुश्मनी जो है वो यहाँ पे उसने हासिल कर ली. जो एक प्रोसेस स्मूथली चल रहा था वो यहाँ पे थोड़ा सा उसका एक टर्निंग पॉइंट आया और वो प्रोसेस ब्रेकअप हुआ. Cold War proxy conflicts in the Middle East. Now, moving forward in this slide, during the Cold War, the US and Soviet Union never fought directly. Instead, they turned the Middle East into a chessboard of proxy wars. After the 1956 Suez Crisis, Egypt under Nasser, their Egyptian president, they leaned towards the Soviet, while Syria became a hub for Soviet weapons and advisors. Separation हो गई यहाँ पे. On the other side, Israel emerged as America's closest ally, receiving massive military and financial aid. The Gulf states, especially Saudi Arabia, also fell into the USA camp, benefiting from oil security deals. This rivalry of split the region into two blocks, pro-Soviet and pro-Western countries. The result: more arms, more conflicts, and deeper instability that reshaped the region's politics for decades. अब ये समझिए कि दोनों सुपर पावर्स ने मिडल ईस्ट को एक बैटलफील्ड बना दिया जहां जो असली जंग है वो उनके हथियार और असर रसूख जो है वो लड़ रहे थे. मीन्स के एक अलग सा वहां पे एक बैटलफील्ड का एक चेस बोर्ड का सिनेरियो या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे अराइज अप हो गए. Now, the Camp David Accords, US as Middle East mediator. अब Camp David क्या है? यहाँ पे it is important to know Camp David Accord 1978 was the first peace treaty between Israel and an Arab state, Egypt. इन दोनों के दरमियान ये फर्स्ट ट्रीटी थी जो कि मीडिएट की थी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने. फॉर अमेरिका इट वाज अ बिग विन. Egypt came into the US camp. Soviet influence declined, the Suez Canal was secured, and the US emerged as the main peace mediator in the region. In return, Egypt received $2.2 billion. 2.2 billion US aid every year. अब सोचिए पीस के नाम पर असल फायदा अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है उसे यहाँ पर मिल रहा था. In 1978, US President Carter, he brokered peace between Israel and Egypt, the first such treaty which boosted, boosted the America's role as the main peace mediator, reduced Soviet influence, and secured the Suez Canal, with Egypt rewarded by 2.2 billion aid annually. यहाँ पर इजिप्ट को जो है वो एड हासिल हुई. Soon after Iran and Iraq war, give US another chance to expand influence. एक और golden chance मिला यहाँ पे US को through neutrals. America secretly aided Iraq with intelligence and technology while also selling arms to Iran in the Iran control जो scandal था उसके अंदर. In short, अमेरिका ने एक तरफ कैंप डेविड जो मुहाइदे से
अमन का किरदार बनाया, ठीक है, वहां पे इसने एक पीसफुल मीडिएटर के तौर पे अपना जो है वो रोल प्ले किया। और दूसरी तरफ ईरान इराक जंग में दोनों के जो कमजोरियां थी, ठीक है, उन्हें रखकर डिफरेंट खित्ते के अंदर अपनी ताकत को मजबूत बनाया। इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों इराक और ईरान की को जो है वो वीक साबित करके और उनकी जो कमजोरियां हैं उन्हें आपस में उनकी जंग करवा के या कुछ भी आप इसको इस सिनेरियो में क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बेनिफिट जो है वो अमेरिका को हासिल हुआ। एक तरफ उसने मीडिएटर का रोल प्ले किया और दूसरी तरफ ईरान इराक वॉर में जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन अपनी बना ली। लेट्स गो बैक टू द ईयर 1990। अब 1990 की तरफ अगर हम जाएं तो व्हेन इराक अंडर सदाम हुसैन सडनली इन्वेडेड कुवैत, ठीक है, इराक ने जो है वो सडनली कुवैत के ऊपर हमला किया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड दिस स्मॉल इन्वेजन शेक द होल वर्ल्ड? ऐसा क्या हुआ कि इस इन्वेजन ने इराक ने जो ईरान पर सॉरी कुवैत पर अटैक किया कि इस इन्वेजन ने दिस एक्चुअली शेक द होल वर्ल्ड। What, why did this small invasion shake the whole world? The answer lies in oil and geopolitics. Two important answers. Kuwait had huge oil reserves, and its fall meant Iraq would control almost 20% of the world's oil. For the United States, this was unacceptable. So, what happened? The US moved fast. It built a 35 nation collection. Imagine, means आप ये imagine करें कि countries जो from every corner of the globe united under American leadership. Together, they deployed 618,000 troops. And here, listen carefully. Out of these, almost 425,000 were American soldiers. That a massive show of force. A large amount, काफी ज्यादा जो है वो इसमें आर्म और ट्रूप्स जो है वो अप्लाई किए गए इस वॉर के अंदर. Now the war itself first came 6 weeks after air campaigns, where bombs and missiles rained down Iraqi positions. Then in just 100 hours, इतना मैसिव जो है ये अटैक हुआ कि within 100 hours of ground war, yes, means barely 4 days, the Iraqi forces were collapsed. Kuwait was free and America had proved its dominance. But let's pause here and reflect. Was this war only about liberating Kuwait, or was it about something much bigger? यहाँ पे ऐसा क्या था कि ये क्या रीजन रहा अमेरिका का इतना ज्यादा इराक के सपोर्ट करने का, इतने ज्यादा ट्रूप्स के साथ विद आर्मी ऑफ ऑलमोस्ट 35 नेशंस, और कुवैत को जो है वो कम्प्लीटली फ्री करवाने का ऐसा अ, आप क्या आपको लगते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी प्लीज मुझे यहाँ पे दें कि वाज दिस वॉर ओनली अबाउट लिबरेटिंग कुवैत, सिर्फ कुवैत के लिए अमेरिका ने इतनी फेवर की, या फिर ये इट वाज अबाउट समथिंग मच बिगर? ऐसा बिगर क्या हो सकता है? क्या फायदा यहाँ पे यूएस स्टेट्स का था अपना? The real victory for the United States was securing oil resources. रियल विक्ट्री उनकी ऑयल रिसोर्सेज को सिक्योर करना था एंड प्रोटेक्टिंग इट्स एली सऊदी अरेबिया। अमेरिका ने यहाँ पे दुनिया को वाजे पैगाम दिया, वी विल यूज ओवरवेलमिंग पावर टू डिफाइन आवर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए हम अपनी ओवरवेलमिंग पावर जहां तक यूज हो सकी वो जरूर करेंगे। द वार actually cost 61 billion, but here's the interesting part. Listen it carefully. 61 billion यहाँ पे cost हुआ, लेकिन जो interesting part ये है कि almost 80% of that cost was paid by allies like Saudi Arabia, Japan and Germany. इस वॉर में मीन्स अमेरिका के इतनी ज्यादा एक्सपेंस नहीं आया जितना 80% जो है इंटरेस्ट वो पेड किया गया किसकी तरफ से? जो उसके एलीज कंट्रीज थे अमेरिका के साथ, अरेबिया, सऊदी अरेबिया, जापान एंड जर्मनी. सो अमेरिका फॉट द वॉर बट अदर्स पिक्ड अप द बिल. ओके, यहाँ पे जो फुल डिनर का इंतजाम था, डिनर प्लेट वाज सेट फॉर यूएस, बट बिल्स जो है वो हमारे जो उसके एलीज कंट्रीज थे उन्होंने यहाँ पे किए. एंड द लॉन्ग टर्म रिजल्ट,
a permanent US military presence in the Gulf. New bases were established in Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and Bahrain, and those bases were still are actually still critical today. So friends, Operation Desert Storm. इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? Desert Storm was not just a short war. It was a turning point, a moment when America declared itself the unchallenged military power in the Middle East, protecting oil, allies, and its global supremacy. Now, I'm leaving a question here for you. Did Operation Desert Storm bring stability to the region? क्या इससे खित्ते में कोई अमन या कोई स्टेबिलिटी आई? Or did it set the stage for future conflicts? इससे मजीद कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए एक स्टेज सेटअप हो गया, मजीद तनाजात का शिकार होना था इस खित्ते को. So next we have economic sanctions as tools of foreign policy. Let's look at another powerful tool. The United States has used in the Middle East was economic sanctions. इकोनॉमिक सैंक्शन एक और इम्पोर्टेंट टूल यहाँ पर यूएस ने मिडल ईस्ट के ऊपर यूज किया. आफ्टर द कुवैत invasions in 1990, Iraq forced comprehensive sanctions. Imagine this, Iraq's GDP dropped from 38 billion to just 10 billion. Okay, in a single year. The UN even estimated that more than 5 lakhs children were died due to shortages of food and medicine. It's a big loss. To respond to this crisis, the Oil for Food program was actually started in 1995, but by then the damage was already severe. तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान already हो चुका था. Iran too has lived under sanctions since 1979. ईरान को भी काफ़ी ज़्यादा sanctions का, बहुत सी पाबंदियों का और शिकार जो है वो रहना पड़ा since 1979 से. Over the decades, the US and its allies actually have targeted Iran's banks, uh, uh, oil exports, technology impacts, and even individual leaders. These sanctions weakened Iran's economy and also fueled anti-American sentiments. एक important reason था anti-American sentiments का because of these sanctions which actually weakened the Iranian economy, and it was a big loss for Iran. And then the Syria. First Iraq, then Iran, and then Syria, starting in 2024, accused of supporting terrorism. यहाँ पे सीरिया को accuse किया गया of supporting terrorism, and later after 2011 civil war, hit with even tighter restrictions, including vital importance like medicines even. So sanctions are often described as a form of economic warfare. यहाँ पे एक इकोनॉमिक वॉरफेयर स्टार्ट हो गई. सैंक्शंस जो है उन्हें इसी तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है एज एन इकोनॉमिक वॉरफेयर की डिफरेंट तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं. ओके, हियर आई एम एंडिंग अप माय लेक्चर विद अ क्वेश्चन. इफ आई आस्क यू, डू यू थिंक these sanctions are an effective alternative to war? क्या ये पाबंदियां वाकई जंग से बेहतर रास्ता है? Or are they simply another way of causing humanitarian suffering? Means एक ऐसी हिकमत अमली जो सिर्फ आवाम को सजा देती है. ओके, कमेंट योर ओपिनियंस. जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने अराइज किए, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2. We have so many points to discuss about US influenced Middle East historical analysis. So please feedback जरूर दीजिएगा. Thank you so much. Allah Hafiz.